Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 19th and 20th of January. The session will be quite interesting and important, students. In this video we will be discussing about various cabinet approvals. We will be talking about the formation of the 8th pay commission that has recently been announced by Ashwini Vaishnav ji. Next thing, we will be talking about boosting the India's startup ecosystem. Then we will be talking about the 6G wireless links. We are talking about how we can increase this, what are the technology that will be required here, what are the chipsets that will be required for this 6G wireless links. Next thing, we will be talking about the India's 6th astronomical observatory and Eastern India's first that has been inaugurated in West Bengal. Next thing, we will be talking about various initiative and an application that has been launched to boost the tourism. Then World Economic Forum, they have included CEAT and HUL, these two companies, into the global lighthouse network. What is this global lighthouse network, why it is important, what is the significance of it, everything will be discussed in this video. Also students, if you are new to our channel and haven't subscribed to us, do subscribe. We are one stop solution for current affairs. We upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning, weekly current affairs, monthly current affairs, and topic wise uploaded regularly to give you a better insight. Also students, share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly, and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving, and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Let's start with national affairs, students. First thing first, cabinet, union cabinet. It is chaired by whom? It is chaired by Prime Minister Narendra Modi, right? And recently some projects has been approved here. First is for the construction of the third launch pad for ISRO's Satish Dhawan Space Center at Sriharikota, Andhra Pradesh. Second, formation of the 8th pay commission to revise the salaries of the central government employees. We will be discussing this in a bit. Next, third is your reframing of 687 megahertz of spectrum from the government ministries and ISRO to support the 5G and future 6G generation internet services. Fourth, revival plan for the Rashtriya Ispat Nigam Limited with a cost of 11,440 crore rupees. And fifth, creation of 2 new CISF reserve battalions if needed in case of emergency, right? So these are the approvals here. We will be discussing this 8th pay commission, right? Important, take a note of this. This will be implemented from when? It has to be implemented since from 1st of January 2026. Students, all those individuals who are preparing for the government exam, it should be a very big news for you all. It should be a very big and important motivation for you all with this, because there will be a huge hike in the salaries that we will be seeing after this commission is being implemented. This pay commission, it comes after every 10 years, right? And it makes sure that the salaries of individuals, of the central government employees, they are in par with the industry, or they are at par with the inflation and everything that is being in the market. If we talk about this, so Union Cabinet has recently approved the formation of the 8th pay commission to revise the salary and pension of over 1.2 crore central government employees and pensioners. The term of the 7th pay commission will conclude on 31st of December 2025, after which the 8th pay commission will come into effect. And it is expected that the minimum basic salary of the central government employees will increase from 18,000 rupees to over 40,000 rupees per month.
It is expected that there will be an average salary hike of almost 25% to 30%. Let's see, there will be a commission that will be formed, then the report will be submitted, and we will be then seeing that what are the changes that is happening. If we talk about this pay commission, as I mentioned, it is formed once every 10 years to advise the government on revising the pay structure and scale for their employees. Since 1947, 7 pay commission has been constituted since 2016, and now 7th pay commission is going on till 2026, and from 2026 onwards it will be the 8th pay commission, right? The 7th pay commission was formed by the UPA government on 28th of Feb 2014. It was chaired by Justice Ashok Kumar Mathur. Next is CDOT, that is Center for Development of Telematics. It comes under the Department of Telecommunication under the Ministry of Commerce. They have recently partnered with IIT Bombay, and they have signed an agreement to develop the optical transceiver chipset for high bandwidth 6G wireless links, right? So it is CDOT. They have partnered with whom? IIT Bombay, and it is for the development of chipsets, optical transceiver chipset for the high bandwidth 6G wireless links. So basically these will be utilized, this high bandwidth transceiver chipset will be utilized in the 6G wireless links for receiving and transmitting the signals. Next is India's 6th astronomical observatory and Eastern India's first inaugurated in West Bengal. Direct question, students, here, that where is the India's 6th astronomical observatory that is located? It is in West Bengal. Or question can be asked about Eastern India's first astronomical observatory. Where is it located? It is located in West Bengal, and in West Bengal too it is the Purulia district where this is located. The observatory center has been named after the renowned scientist Satyendra Nath Bose, and the name of this observatory is Satyendra Nath Bose Center for Basic Sciences. Correct? Take a note of this. Moving on. Next is government has recently launched Bharat Ranbhumi Darshan application to promote the battlefield tourism, right? So we can say in order to boost the tourism in India, and this tourism will be boosting in which sector, right? It will be along the battlefield areas along India's border, right? So this Bharat Ranbhumi Darshan application, question can be asked here in 2 to 3 format, that name that application that will promote battlefield tourism or promote tourism along India's border. It is Bharat Ranbhumi Darshan application. This was launched by whom? Rajnath Singh, our defense minister, and this is a website and as well as an application that will enable the civilians to visit and explore the significant battlefields along India's border. This application was launched on 15th of January, and we know 15th of January is your Army Day. Correct? Take a note of this. Here, the users can explore various sites such as your Kargil War Memorial, that is Dras War Memorial in Ladakh, then Wolong War Memorial that is located in Arunachal Pradesh, Tawang War Memorial in Arunachal Pradesh, right? And many other. Moving on, next students, we are discussing international affairs now. World Economic Forum, they have included 2 organizations from India, that is CEAT and Hindustan Unilever Limited, right? They both have been recently included into the Global Lighthouse Network. First thing first, students, what is a Global Lighthouse Network? Global Lighthouse Network is basically a group of companies that make sure that the manufacturing is growing globally, right? That means that the manufacturing sector, the performance of manufacturing sector and supply chain is up to the mark. So this Global Lighthouse Network, it was an initiative that was by World Economic Forum, and it was co-founded along with McKinsey Company. Correct? It was launched in 2018, and now this World Economic Forum has included CEAT and Hindustan Unilever Limited from India into the Global Lighthouse Network. Correct? Apart from this, remember, as I mentioned, this will promote manufacturing transformation through innovation, and there are 15 other members including UAE, China, Germany, UK, USA, Morocco, many more that are a part of this Global Lighthouse Network. So we can say as I mentioned, other 15 nations are there, so a total of 16 nations are there in this, and similarly, remember, 16 Indian companies are they part of this Global Lighthouse Network. Correct? Take a note of this.
Moving on, here you can see Global Lighthouse Network, initiative by World Economic Forum, co-founded by McKinsey Company in 2018, and the network aims to enhance the performance of manufacturing and supply chains by adopting the 4IR technologies. One more thing, this what is this 4IR? Right, it is your basically fourth industrial revolution technologies used in manufacturing. Next is Indian Navy has participated in the fifth edition of La Perouse 25 multinational naval exercise. Right, so it is our Indian Navy that participated in the 55th edition of this La Perouse 25 multinational naval exercise, and this exercise was held where this question can be asked, name the location where this La Perouse exercise was held. So this exercise was held in France, right? Then this exercise started on 16th of January and it will continue till 24th of January. Apart from this, in this exercise 9 nations took part, or the navies of 9 nations took part, that is India, USA, Australia, Canada, France, Indonesia, Malaysia, UK and Singapore. Correct. Now, as I mentioned, this is the 5th edition of the exercise, right? If asked where was the 4th edition of this exercise was held, it was held in Bay of Bengal. Correct. One more thing, as I mentioned, just don't remember the location as France here. Remember, it was held in the Straits of Malacca, in the Straits of Sunda and in the Straits of Lombok. Right. Next is banking and finance. PFC, that is your Power Finance Corporation, they have recently signed a 120 billion Japanese yen loan deal with Japanese bank, right, for renewable energy projects in India. Right, so this is the loan amount. How much loan amount? 120 billion Japanese yen. Which is the organization they have signed this deal? It is Power Finance Corporation. With which bank? That is JBIC, that is Japan Bank for International Corporation. This amount, if we convert into Indian rupees, this is close to 6,600 crore rupees, and it is for the development of the renewable energy projects in India. Take a note of this. This loan term will be of 20 years here, right? And the amount or the money here will be used in the green projects, green initiatives. Correct. If we talk about PFC, Power Finance Corporation, it is a Maharatna CPSC that comes under the Ministry of Power, and who is the chairman and managing director of Power Finance Corporation? Parminder Chopra, headquarter of which is in New Delhi. Next is economy and business. Our Indian economy is expected to grow by 6.7% in the next 2 financial year. As we mentioned that has been news that earlier we were projecting that India will be growing above 7%, but because of various geopolitical reasons, and now we are also saying that the Indian rupees is depreciating. We are now close to 86.64 rupees, equal to $1. We have depreciated almost by 4% in the last few months. That is a negative sign for us. Because of this, the export will become good, but the import will become costly, right? And we know that India is import dependent country. We import more as compared to the amount we export, so we have to pay more, right? And because of that reason, there is a high chance that inflation will be rising in India, and there is a high chance that the price of the goods will increase significantly because of the rise in this amount. Correct. So coming back, it is expected our country will be growing by 6.7% in the next 2 financial year, that is FY26 and FY27. And one more thing, remember, this data has been released by whom? It has been released by World Bank. Who is the president of World Bank? Ajay Banga, headquartered in Washington DC. Also, this stated that the global scenario, if we talk about, that the global growth rate will remain stable at 2.7% in both 2025 and 2026. Next is IREDA. They have partnered with Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, GMR and NEA for 900 megawatt Upper Karnali hydropower project that will be established in Nepal. So there are 3 organizations, students, that you need to remember. That is IREDA, that is Indian Renewable Energy Development Agency. IREDA, they have recently entered into a joint venture. It is with Shimla, Himachal Pradesh based Satluj Jal Vidyut Nigam Limited, and with GMR Energy Limited, and NEA is your Nepal Energy Authority,
right? So these 3-4 organization, they have, or this joint venture, they GMR and NEA, that is Nepal Electricity Authority, right? They have recently partnered together for which, for what reason they have partnered together? They will be developing a 900 megawatt Upper Karnali hydropower project that will be established in Nepal, right? And it is expected that this project will be in operation for 25 years from its commercial operation date, and $1.5 billion will be spent on it. Next is BPCL, that is Bharat Petroleum Corporation Limited. It is Mumbai, Maharashtra based. They have recently signed a loan agreement with SBI-led consortium for expansion projects. This loan is worth 31,802 crore rupees, and it is with a consortium of banks that are led by State Bank of India. This consortium includes Punjab National Bank, Union Bank of India, Canara Bank, Bank of India, and Exim Bank. Next is Uttarakhand. They have recently signed an MOU with Iceland's Verkis for geothermal energy development. I repeat, Government of Uttarakhand, they have signed a memorandum of understanding with Icelandic company Verkis Consulting Energies for geothermal exploration and development in Uttarakhand state, right? And this agreement was signed by the Chief Minister Pushkar Singh Dhami and Icelandic Ambassador Dr. Benedict Hossulken. Correct. And as I mentioned, this MOU will basically promote geothermal energy across identified sites in Uttarakhand. Next is appointments and resignation. Nawaf Abdullah Salim Salam, right, has been appointed as the 53rd president or 53rd prime minister of Lebanon. Directly remember, he will replace the incumbent prime minister Najib Azmi Mikati. Right. Next is Jeff Bezos Blue Origin. Blue Origin is the company of Jeff Bezos, similar to what SpaceX is of Elon Musk. Correct. So Blue Origin launched a New Glenn rocket on first flight test. Right. So question can be asked, this New Glenn rocket or NG rocket is of which company that was recently launched? It was launched by Blue Origin. It was a first flight test. It was launched from Cape Canaveral Space Force Station, that is in Florida, USA. And this rocket, that is Glenn rocket, it has been named after John Glenn, who was the first American to orbit Earth. This mission was named as NG-1, that included the first stage booster landing in the Atlantic Ocean. And this Glenn rocket or this Glenn rocket mission, this mission basically to demonstrate this rocket's capability, NG-1 New Glenn rocket's capability, by placing the Blue Ring Pathfinder test satellite into orbit. Right. If we talk about Blue Origin, who is the chief executive officer here? Dave Limp, headquarters of which is in Washington, DC. Next we will be talking about SpaceX. SpaceX Falcon 9 has launched Blue Ghost and Resilience lunar landers from Kennedy Space Center. As you can see it in the picture here, right? This is Blue Ghost. Correct. This is the primary payload, and Resilience, this Resilience lunar lander, it was the secondary payload here. If we talk about this Blue Ghost, named after the Ghost Riders in the sky, it is led by Firefly Aerospace, that was headquartered in USA. This Blue Ghost, it is expected to take about 45 days to reach Moon, gradually increasing its orbit around Earth before entering into the lunar orbit. Right. And it is expected that this Blue Ghost mission targeting landing will be on 2nd of March 2025. It will span around 60 days. And here there are two payloads, that is, let me show you, there are these two payloads here, Lunar Global Navigation Satellite System, and it is RED PC, that is Demonstration Radiant Tolerant Computing and Transit. Correct. So this is the payload for the Blue Ghost mission. Second is your Resilience mission. Right. Resilience mission will be focusing, that is the secondary satellite as mentioned, right? Resilience lunar lander, this is the secondary payload here. So if we talk about this Resilience mission, it will focus on deploying the innovative technologies and cultural payloads. Correct. Moving on. And these were launched by whom? As I mentioned, these satellites, this Blue Ghost was launched by Firefly Aerospace. Next is China. They have launched PRSC EO-1 satellite for Pakistan's space program. I repeat, China, they have recently launched a satellite, right? That is the Pakistan's first remote sensing satellite, Earth Observation 1. I repeat, Pakistan's remote sensing satellite, Earth Observation
1. It was launched using the Long March 2D rocket from China only, and this satellite was designed and developed by Pakistan's Space and Upper Atmosphere Research Commission. Next, students, that's all for the day. Now let's move to some revision part that will be beneficial for your learning. Next, which platform has recently partnered with Urban Company to empower women salon and beauty parlor owners? So, women entrepreneurship platform, right? They partnered with Urban Company and they are recently empowering the women salons and beauty parlor owners. Next, name the campaign that was launched by the Union Minister Annapurna Devi to eradicate child marriage and empower the young girls in India. So, name of that campaign is Bal Vivah Mukt Bharat. Right? This launch coincides with the 16 days of activism against gender-based violence. Also, this event marked the launch of Child Marriage Free Bharat portal. The aim of this campaign is to reduce child marriage below to bring that the total number of child marriage below 5% by 2029, right? And under this law it is prohibited to get a girl married under 18 years of age and boys under 21 years of age. Next, Union Minister Dr. Jitendra Singh has announced the selection of 8 startups to support DASH and the National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System. So what is it? It is National Quantum Mission. Even if you remember, a chip Willow has been launched by Google, and it is expected it will be one of the most advanced and important chip that will be used in large amount of computation or large processing where it is required, right? And it will be a game changer for AI. Next, where was the India-Singapore bilateral military exercise Agni Warrior held from 28th to 30th of November? So where was this held? It was held in Maharashtra, right? It was from 28th of November to 30th of November, and this was the 13th edition of this joint military exercise held in Maharashtra. Next, name the portal that was recently launched by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution that will enable the consumers to file their complaints. It is e-Dakhil portal, right? And it was first introduced on 7th of September 2020 by the National Consumer Dispute Redressal Commission. It will provide efficient and convenient way for the customers to approach the relevant consumer forum, right, and file for their grievances. Next, which bank has recently signed an MOU with MasterCard Impact Fund to enhance MSME financing across the Asia Pacific region? So, which bank has signed this MOU? It is Asian Development Bank, that is ADB, and this will help to enhance the MSME financing. Right? Under this partnership, MasterCard, they will give $5 million to the financial institution that will boost the lending in the MSMEs. And this grant will help to unlock $1 billion in Asian Development Bank financing for a period of 4 years. Next, Hemant Soren was sworn in as the Dash Chief Minister of Jharkhand. This marked Hemant Soren's Dash term as the Chief Minister of Jharkhand. So Hemant Soren was sworn in as the 14th Chief Minister of Jharkhand, and this marks Soren's 4th term as the Chief Minister of Jharkhand. So right option is option 2. Next, who has been recently elected as the 11th President of Asian Development Bank? So Masata Kanda has been appointed as the 11th President of Asian Development Bank. He will be succeeding whom? He will be succeeding Masasugu Asakawa. Next, from which submarine Indian Navy recently tested the K4 nuclear capable ballistic missile? So it is INS Arighat, from which our Indian Navy has tested this K4 nuclear capable ballistic missile. This K4 will have a range of 3,500 km. It is an upgraded version of the K15 missiles that were used on INS Arighat. And this INS Arighat, remember, this is India's second nuclear powered ballistic missile submarine.
Next, for which year India has recently got the hosting rights for the Asia Rifle Pistol Cup? This is for the year 2026. This competition is scheduled to take place in New Delhi in 2026. Also, previously our country India hosted the 8th edition of Asian Air Gun Competition, that was in 2015, and the Asian Olympic qualifier in 2016. Next, which organization has recently signed an MOU with Research Society for the Study of Diabetes in India to advance quality and consistency of diabetic care in India? So, which is that organization? It is National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers. This MOU will leverage the distinctive capabilities of NABH to drive national quality certifications and accreditation programs in developing best practice clinical guidelines for diabetes management and research. Next is 18th edition of NCB International Conference and Exhibition on Cement, Concrete and Building Materials held from 27 to 29th of November in New Delhi. Who received this NCB Lifetime Achievement Award in recognition of his exceptional contributions to the cement and concrete sector? So Dr. Nani Gopal, I correct, no, Dr. H.C. Viswarya, right? Dr. H.C. Viswarya has been awarded with the NCB Lifetime Achievement Award in recognition of his contribution to cement and concrete sector. The theme of the conference during which this award was presented is Cement, the Net Zero Future. Next, exercise Sinbex. This is a joint tabletop exercise held between Indian Army and it is held between the Cambodian Army. Right, where was this held? Location, it was held in Pune, Maharashtra. Right, so this is between Indian Army and Cambodian Army. The exercise Sinbex, that is a joint tabletop exercise. This was this exercise, remember, in this question can be asked that where was this exercise held? So it was held in Pune, Maharashtra, and this exercise Sinbex had 20 personnel from both sides, and from Indian Army it was infantry brigade, from which we saw these 20 personnels. Next, according to Niti Aayog's report, that is India's booming gig and platform economy perspectives and recommendations of the future work, it was published in June 2022. The number of gig and platform workers is expected to increase to 23.5 million by what year? By FY 2030. Right, the gig force workers will constitute 6.7% of the non-agriculture workforce or 4.1% of the total livelihood in India by FY 2030. As per the estimation of the report, around 7 million, that include women, were engaged in the gig economy in 2021, which constituted 2.6% of the non-agriculture workforce, and it is expected that from 2.7 or 2.6% in 2021, it will increase to 6.7% in 2030. Also, this data report suggested that by 2030, it is expected that this gig sector has a potential to create 90 million jobs, and it will contribute 1.25% of the GDP. Next, in November, India was re-elected to the UN Peacebuilding Commission for the dash term, consolidating its position in global peace efforts. So, India was re-elected to the UN Peacebuilding Commission for 25-26, and this is for positioning in global peace efforts. Correct? Take a note of this. Next is, to which country Russia handed over the BRICS chairmanship in the final Sherpa and Sous-Sherpa meeting of BRICS held in Russia in November. So Russia handed over the chairmanship of BRICS to Brazil, and Brazil was also the second BRICS country who opposed against the Belt and Road Initiative of China. Next, which country and India has recently signed a statement of intent to collaborate on design and development of electric propulsion systems for the Indian Navy? It is United Kingdom. Next, when is UN Day for Remembrance of All Victims of Chemical Warfare annually observed across the globe? It is 30th of November we observe this day, and the first ever day was observed in 2016.
Next, which state hockey team has recently won the 14th edition of Hockey India Senior Men National Championship 2024? So, which country or which state hockey team has won it? It is Odisha State's hockey team that won it by 5-1 in the finals by defeating Haryana. Next, which company has recently signed an agreement with the Transport Department of the Government of West Bengal worth 226.18 crore rupees? It is GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. These vessels will have a catamaran hull design and will be built with aluminium and fiber reinforced polymer. Next, name the joint military exercise held between the Indian Army and Malaysian Army that commenced at the Pahang district of Malaysia from 2nd to 15th of December. What is the name of that exercise? It is Harimau Shakti. And in this, from Indian Army, remember, Meher Regiment. Personals from Meher Regiment took part. That is 78 persons from the Meher Regiment took part. Next, in November, Government of India and Asian Development Bank have signed a dash loan agreement aiming at enhancing the horticulture crop farmers' access to certified disease-free planting materials. So, Government of India and Asian Development Bank, they have signed $98 million loan here. Next, who has been recently elected as the first female president of Namibia for a period of 5 years? So, Nedampuli Netumbu Nandi Nadaiwa, right, has been appointed as the first female president of Namibia. Next, in November, World Trade Organization General Council unanimously reappointed Ngozi Okonjo-Iweala as the 8th Director General for a consecutive 4 years term. This will be her second term that will begin on 1st of September 2025. Next, where was the inaugural session of the Global Soil Conference held in November? Where was it held? It was held in New Delhi. And the theme of this conference is Caring Soils Beyond Food Security, Climate Change Mitigation and Ecosystem Services. Next, who has recently chosen as the US ambassador to the North Atlantic Treaty Organization? So, US ambassador to NATO, he will be Matt Whitaker, right? Next, under which ministry Sugamya Bharat Abhiyan, also known as the Accessible India Campaign, a flagship initiative for the Government of India, has completed 9 years of successful implementation on the 3rd December 2024. So it is Ministry of Social Justice and Empowerment. Correct? So Sugamya Bharat Abhiyan comes under your Ministry of Social Justice and Empowerment. Next, with which organization the Ministry of Defence has recently signed an agreement for short refit and dry docking of Indian naval ship Vikramaditya? It is with Cochin Shipyard Limited, and this contract is valued at 1,207.5 crore rupees. That is supposed to last the 5 months, and here the effort is in with the efforts of the Government of India's aim, that is Atmanirbhar Bharat, Self-Reliant India and Make in India initiative. This INS Vikramaditya, it is a 45,000 ton aircraft carrier, right? And the upgrades here that will be done on this INS Vikramaditya will boost the carrier's operational readiness, and also the systems here, technology will be updated. Next, which traditional sari from Gujarat has recently received the GI tag from GI industry? So it is Gharchola sari. Name of that sari is Gharchola sari, that recently received the GI tag. Next, according to recent report on science-based target initiative commitments by Indian companies that was released by Dash, India has secured which spot globally? So this data was released by ICRA ESG, Economic Social Governance Rating Limited, and here India stood at 6th position globally. UK has topped this with a total of 702 companies that are following this SBIT, that is your commitments, correct, that is your science-based target initiative commitments, and from India there are 127 companies, whereas India is on the 6th position and UK is on the 1st position. Next, which company has recently topped in India and the world respectively as per the report CIPRI Top 100 Arms Producing and Military Services Companies 2023 data released by CIPRI. So, who topped this in India and the world? So, Hindustan Aeronautics Limited in India,
and in globally it is Lockheed Martin that secured the top position. If we are talking about Hindustan Aeronautics Limited globally was at the 43rd position. From India, then BEL was at the 67th position and Madgaon Dock Shipbuilders Limited was at the 94th position. Next, USA approved 1.17 billion deal $1.17 billion deal to supply advanced communication systems, sensors, logistics support to enhance the Indian Navy's dash MH-60R multi-role helicopter. Right, this is of Sikorsky, right? Indian Navy's Sikorsky's MH-60R multi-role helicopter. This US-made helicopter will be replacing the Sea King choppers that served in Indian Navy for almost 3 decades. Next, according to OECD's Economic Outlook December 2024, India's growth forecast has been increased by 20 basis point to dash in the FY25. So it has been increased by 20 basis point to 6.8%. Next is Rumana Sinha Segal, a member of Hyderabad, Telangana based T-Hub, and Akshay Deshpande, the associated startup founders of Switcheco, which have been recently honored with the Karamveer Chakra Award for FY25. Question asked is which organization instituted the Karamveer Chakra Awards along with Indian Confederation of NGOs? So it is by United Nations. Right? Next, students, is our homework section. First question. Tell me recently UP government they have partnered with which cloud platform to set up a AI powered grid network. Second question. Tell me recently a manufacturing platform was launched by Piyush Goyal recently. What is the name of that manufacturing platform? Third, tell me who was the chairman of the 7th pay commission that was established, right? Who released the report, right? Tell me the name of that person we discussed today. So students, this is your homework. Now let's move to the Hindi segment of this video. हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम 19 एंड 20 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्टूडेंट्स। 8th पे कमीशन को गठन करने की बात कर दी गई है एंड 1 जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड है कि ये लागू हो जाएगा, जो कि इसकी टाइमलाइन है। इस वीडियो में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे कुछ कैबिनेट अप्रूवल्स की, देन हम बात करेंगे इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने की यहाँ पे बात की गई। देन C.DOT एंड IIT बॉम्बे के द्वारा एक अग्रीमेंट साइन किया गया टू डेवलप द ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस। देन हम बात करेंगे इंडिया का छठा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई है, किस लोकेशन में, वो लोकेशन बात करेंगे। देन हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है एज वेल एज एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जो कि बैटलफील्ड एरियाज जो हैं इंडिया के बॉर्डर के पास, वहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात करता है। देन हम बात करेंगे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की। ये नेटवर्क क्या है, ये बेसिकली कंपनीज यहाँ क्यों ज्वाइन होती हैं, किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इंडिया की कौन सी कंपनीज अभी ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क का पार्ट बनी है। तो इस सारा इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा एंड देयर आर मैनी न्यू स्टूडेंट्स जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी। इसी के अलावा स्टूडेंट्स हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सुबह 5 बजे अपलोड करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एंड टॉपिक वाइज रेगुलरली अपलोड किया जाता है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in.
Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. चलिए स्टूडेंट्स, नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे कैबिनेट अप्रूवल्स की। सबसे पहले तो यूनियन कैबिनेट किसके द्वारा चेयर की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कौन है प्राइम मिनिस्टर? हमारे नरेंद्र मोदी। तो अभी कुछ अप्रूवल्स देखते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्ड लॉन्च पैड फॉर इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए एट श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। सेकंड, 8 पे कमीशन की हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, ये फॉर्म हुआ। थर्ड याद रखेंगे, रीफ्रेमिंग ऑफ 687 मेगाहर्ट्ज ऑफ स्पेक्ट्रम फ्रॉम गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड इसरो टू सपोर्ट 5G एंड 6G सर्विसेज। देन चौथा, रिवाइवल प्लान फॉर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 11,440 करोड़ रुपीज। एंड पांचवा, क्रिएशन ऑफ 2 नई सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिजर्व बटालियंस के लिए। अगर हम आ जाते हैं मेन से 8 पे कमीशन पर, देखो अभी सरकार के द्वारा एंड अभी अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा अनाउंस किया गया कि पे कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा। इससे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनकी सैलरी रिवाइज होती है, राइट। एंड अभी जो 7वां पे कमीशन चल रहा है, ये 1 जनवरी 2016 से स्टार्ट हो गया था एंड 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। इसका 10 साल का टेन्योर रहता है, हर 10 साल में ये पे कमीशन आता है। एंड अब 8 पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से इस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो 18,000 से बढ़ के 40,000 रुपये पर महीने तक हो सकती है। अभी तो रिपोर्ट कमीशन सेटअप होगी, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेट्स सी कहाँ जाती हैं चीज़ें, बट ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है एंड इससे स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलना चाहिए। आपकी सैलरी इतनी बढ़ जाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा बेटर आज के टाइम पर नहीं रहेगा अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, राइट। आपकी जो प्राइवेट कंपनीज है उससे भी ज़्यादा सैलरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, करेक्ट। चलिए एक चीज़ और, अगर हम बात करें पे कमीशन की, जो अभी पे कमीशन 7वां पे कमीशन चल रहा है, ये यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 2024 में, राइट। लागू हुआ था 2016 से 2026 तक रहेगा ये। इसको चेयर किया गया था, जो कमीशन थी उस कमेटी बनाई गई थी, उसको चेयर किया था किसके द्वारा? जस्टिस अशोक कुमार माथुर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, सी डॉट एंड IIT बॉम्बे, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया टू डेवलप ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर चिपसेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक्स के लिए। तो वायरलेस लिंक्स के लिए ट्रांसमीटर, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर चिपसेट को बनाने की बात की गई, जिसके लिए सी डॉट एंड IIT बॉम्बे के द्वारा यहाँ पे एक MOU साइन किया गया, पार्टनरशिप साइन की गई। इसी के अलावा याद रखेंगे DPIIT एंड इन्होंने पार्टनर किया ITC के साथ, करेक्ट, ताकि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, उसको बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया ग्लोबल लेवल पे 3rd पोजीशन पे आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप्स, राइट। एंड यहाँ पे और उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको सस्टेनेबली ग्रो करने के लिए, उनकी मेंटरशिप करने के लिए, फाइनेंस में हेल्प करने के लिए, उनकी मार्केटिंग में मदद करने के लिए यहाँ पे लॉन्च पार्टनरशिप की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंडिया के 6ठे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बारे में। ये कहाँ इस्टेब्लिश की जा रही है? वेस्ट बंगाल में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, एट द पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में। इस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का नाम क्या रहेगा? सत्येंद्र नाथ बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड ये इंडिया का 6ठा रहेगा एंड ईस्टर्न इंडिया का पहला रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अभी सरकार के द्वारा भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। एप्लीकेशन तो यहाँ पे लॉन्च ही की गई है, एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, ये भी याद रखेंगे। ये बेसिकली क्या है कि जो इंडिया का बॉर्डर है, राइट, इंडिया के बॉर्डर पर जो जहाँ पे वॉर हुई हैं, राइट, वो क्या है बेसिकली वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, बैटल फील्ड्स का वो टूरिस्ट स्पॉट्स बन सकता है, राइट। तो वहाँ पर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया टू प्रमोट बैटल फील्ड टूरिज्म। इंडिया के जो बॉर्डर्स हैं उसके अलॉन्ग साइड यहाँ पे ये टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा। एंड ये 15 जनवरी को लॉन्च किया गया था, जो कि आर्मी डे था। आपका होमवर्क है, मुझे बताओ ये कौन सा एडिशन था आर्मी डे का जो भी हमने ऑब्जर्व किया। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इंडियन आर्मी के द्वारा मिलकर। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पर स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की। ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि लुक आफ्टर करती है अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि हम मैन्युफैक्चरिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई टेक्नोलॉजीज लाके इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का हमें मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान रखना चाहिए, एंड ग्लोबली हम कैसे मैन्युफैक्चरिंग को इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड मैकेंजी कंपनी यहाँ पे को फाउंडर थे। इन दोनों के
के द्वारा मिलकर 2018 में ये ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को लॉन्च किया गया था। एंड अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही सीएट एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इन दोनों को ऐड किया है टू द ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क। इंडिया से बात करें तो इंडिया की 16 कंपनी यहाँ पे ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की पार्ट रहेंगी। अगर बात करें इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में कितनी कंट्रीज़ हैं, तो 16 कंट्रीज़ आ जाते हैं, जैसे इंडिया, यूएई, चाइना, जर्मनी, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, यूएसए, राइट, सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ। चलिए अगर मैं बात करूँ ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क की, तो आप देख सकते हैं 2018 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड मैकेंजी एंड कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर बात की गई, यहाँ पे कंपनीज को ग्रो करने की बात की गई, टेक्नोलॉजी की मदद से मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने की बात की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे हमारी इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया 5वें एडिशन ऑफ पेराउस 25 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में। देखो ये जो पेराउस एक्सरसाइज है ना, ये इसका 5वां एडिशन हमें देखने को मिला था। कहाँ पर हुआ था? इन द स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, इन द स्ट्रेट्स ऑफ सुंदा एंड इन द स्ट्रेट्स ऑफ लॉम्बॉक, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल आपके मैरीटाइम ट्रेड्स के रूट्स हैं जहाँ पे ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। 16 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक ये एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी। यहीं पे हम देखेंगे कंट्रीज, जैसे हमारी कंट्री इंडिया, राइट, लेट मी शो यू, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूके, सिंगापुर, इन सब की नेवल फोर्सेस का यहाँ पर हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला, राइट। एंड इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया विद आईएनएस मुंबई, वाइल अदर नेशंस आल्सो डिप्लॉयड वेरियस अदर वेसल्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस। अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इन्होंने एक लोन अमाउंट या फिर एक लोन डील साइन किया है 6,600 करोड़ रुपए की, जो कि अगर हम देखें 120 बिलियन जैपनीज येन रहेंगे। ये किसके साथ साइन की गई? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, JBIC के साथ, राइट। एंड ये जो अमाउंट है यहाँ पे 6,600 करोड़ रुपए का, ये यूज़ किया जाएगा फॉर वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया, ताकि हम इंडिया का जो टारगेट है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन तक हमें पहुँचना है, उसको अचीव किया जा सके। ये जो लोन का अमाउंट है बेसिकली ये 20 साल का टर्म रहेगा इस लोन का। एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए इस लोन को यहाँ पे यूज किया जाएगा। PFC की अगर मैं बात करूं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? परमिंदर चोपड़ा। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। 1986 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 6.7% इन द नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर एज पर द डाटा रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम देख रहे थे पहले इंडिया की इकोनॉमी का टारगेट था कि 7% से हम ज़्यादा ऊपर ग्रो करेंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल विंड्स कह लो, अब बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहाँ पर हमें हिट देखने को मिल रहा है, जिससे हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि हमारी इकोनॉमी 6.6, 6.7, कोई 6.4% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट। तो इंडियन इकोनॉमी 6.7% से ग्रो करेगी इन द नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो मतलब नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर कौन से हो गए? FY26 एंड FY27। वहीं पे अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 2025 एंड 2026 में 2.7% एक्सपेक्टेड रहेगी यहाँ पे ग्रोथ रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है IREDA। इन्होंने अभी पार्टनर किया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। अगर मैं IREDA की बात करूँ ना, ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा। IREDA ने जॉइंट वेंचर साइन किया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। इन्होंने पार्टनर किया GMR एंड NEA। NEA क्या है? नेपाल इलेक्ट्रिक अथॉरिटी। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन अब यहाँ पर क्या करेंगी? एक 900 मेगावाट का पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करेगी, और ये प्रोजेक्ट कहाँ पे रहेगा? नेपाल में रहेगा, राइट। तो IREDA ने जॉइंट वेंचर साइन किया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ। ये जॉइंट वेंचर GMR ग्रुप एंड NEA मिलके 900 मेगावाट का एक हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करेंगी। कहाँ पर? नेपाल में, राइट। एंड एक्सपेक्टेड है यहाँ पे $1.5 बिलियन खर्च हो जाएंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने अभी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है SBI लेड कंसोर्टियम के साथ फॉर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, राइट। तो ये BPCL मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड है। ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। एंड इन्होंने ये लोन अग्रीमेंट साइन किया 31,802 करोड़ रुपीस का, राइट, विद अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक, जो कि SBI के द्वारा लेड किया जा रहा है। इस कंसोर्टियम में कौन कौन से बैंक है? पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, राइट, एंड एक्सिम बैंक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड। इन्होंने एक MOU साइन किया आइसलैंड के वर्कर्स के साथ फॉर जियोथर्मल एनर्जी डेवलपमेंट। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने एक MOU साइन किया है आइसलैंडिक कंपनी वर्कर्स कंसल्टिंग एनर्जीज के साथ,
ताकि जो जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम डेवलप कर सकें। उत्तराखंड में कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई सारी साइट्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं जहाँ पे हम जियोथर्मल एनर्जी का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। उसी को यूटिलाइज करने के लिए ये यहाँ पे एमओयू देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। नवाफ अब्दुल्ला सलीम सलाम, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये 53rd प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं लेबनान के। ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे नाजीब आजमी मिकाती को, राइट, टू बी द न्यू 53rd प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है जेफ बेजोस का ब्लू ऑरिजिन। इन्होंने लॉन्च किया न्यू ग्लेन रॉकेट, जो कि फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जिसका हमें अभी देखने को मिला था, राइट। देखो जैसे स्पेसएक्स एलन मस्क की कंपनी है, वैसे ही ब्लू ऑरिजिन स्पेसएक्स जेफ बेजोस की कंपनी है। ये भी स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करती है, ब्लू ऑरिजिन। एंड इनके द्वारा भी न्यू ग्लेन रॉकेट को डेवलप किया गया है, जिसकी पहली फ्लाइट टेस्ट देखने को मिली केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए से। ये जो न्यू ग्लेन रॉकेट था, इसका मिशन का था NG-1 मिशन था ये बेसिकली, राइट। एंड इसमें क्या था, अभी यहाँ पे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, एक ब्लू रिंग पाथफाइंडर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था इनटू द ऑर्बिट, राइट। चलिए, अच्छा एक चीज और, जो ब्लू ऑरिजिन है इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वो है डेव लिम्प। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसएक्स। अभी हम स्पेसएक्स की ही बात कर रहे थे, इलॉन मस्क और यहाँ पे CEO हैं इनके, राइट। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा भी ब्लू घोस्ट पहला, जो कि प्राइमरी पेलोड था, एंड रेजिलियंस लूनर लैंडर, ये आपका सेकेंड, जो कि सेकेंडरी पेलोड था। इन दोनों को लॉन्च किया गया कैनेडी स्पेस सेंटर से, राइट। अगर हम बात करें ये ब्लू घोस्ट की, तो ब्लू घोस्ट बेसिकली एक मिशन है जो 45 दिन लेगा टू रीच द मून, राइट। ये धीरे धीरे अपना ऑर्बिट अराउंड अर्थ के जो ऑर्बिट है अर्थ के, उसको बड़ा करेगा एंड ये एंटर कर देगा लूनर ऑर्बिट में। ये एक्सपेक्टेड है 2 मार्च 2025 को ये लैंड कर जाएगा इन द मून, राइट। यहीं पे 2 पेलोड्स रहेंगे इस मिशन में, LUGRE जो कि है लूनर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और दूसरा है रेड PC जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा रेडिएशन टॉलरेंट कंप्यूटिंग ट्रांजिट ड्यूरिंग ट्रांजिट, राइट। और फिर आ जाता है रेजिलियंस मिशन, जो कि सेकंड पेलोड रहेगा। रेजिलियंस मिशन का फोकस रहेगा इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को एंड कल्चरल पेलोड्स को यहाँ पे डिप्लॉय करने का, राइट। एंड यहाँ पे जो आपका ये ब्लू घोस्ट मिशन है, इसको लॉन्च किया गया है या फिर डेवलप किया गया है फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है चाइना के स्पेस प्रोग्राम की हम बात करेंगे। इनके द्वारा अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, जो कि लॉन्च की गई चाइना के द्वारा, मतलब बनाई पाकिस्तान ने लेकिन लॉन्च करी चाइना ने। चाइना के लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया। चाइना से ही ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। सैटेलाइट का नाम क्या है? PRSCEO-1, मतलब पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1। आई रिपीट, पाकिस्तान फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन 1, ये सैटेलाइट का नाम रहेगा। पाकिस्तान स्पेस प्रोग्राम के द्वारा बनाई गई, लॉन्च की गई चाइना के द्वारा। लोकेशन क्या रहेगी? चाइना से ही इसको लॉन्च किया गया एंड लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और बेटर होगी। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रेज किया 10,000 करोड़ रुपीज एज अ कूपन रेट ऑफ 7.323%, मतलब 7.23% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअली। 15 साल का ये बॉन्ड रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के द्वारा इस बॉन्ड को यहाँ पे रेज किया गया है, राइट। कितना अमाउंट? 10,000 करोड़ रुपीज। एंड ये जो बॉन्ड यूज लिया गया है, ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा टू फैसिलिटेट सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। तो पोर्टल का नाम क्या रहेगा? संखी पोर्टल। ये अपनी एक API के साथ खुद आता है, जो इंश्योर करता है डाटा सिक्योरिटी, असेसिबिलिटी एंड नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म के साथ भी आप यहाँ पे डाटा को ला सकते हैं। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली सेलिब्रेट किया डायमंड जुबली, जो कि है 60th जो एनिवर्सरी ऑन 26 नवंबर इन न्यू दिल्ली। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? वो है नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राइट। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली साइन किया फाइनल एक्ट ऑफ द रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी को? किस कंट्री के द्वारा? हमारे इंडिया के द्वारा साइन किया गया। आफ्टर अ डेकेड, 2 डेकेड्स ऑफ नेगोशिएशंस के बाद इसको साइन किया गया है। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने इसको अडॉप्ट किया है। एंड इस ट्रीटी के अंदर जो भी इंडस्ट्रियल डिजाइन के पैटेंट्स हैं, IP राइट्स हैं, उनको सिक्योरिटी फाइल करने का ये काम करेगा।
नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन फिजी, कोमोरोस, मेडागास्कर एंड शीशेल्स। तो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस रहेगी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज इनको रिसीव नहीं हुआ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस आरबीआई से। तो अगर यहाँ पे देखें, रेजर पे वो कंपनी है जिनको पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस यहाँ पर नहीं मिला है, बाकी सभी को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया कितने अमाउंट का फंडिंग फॉर एलिमेंट प्रोजेक्ट जो कि त्रिपुरा एंड नागालैंड में रहेगा। ये एलिमेंट प्रोजेक्ट क्या है? एनहेंसिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट। इस एलिमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 1 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाएगा। 4,35,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जाएगा, एमिशंस को रोका जाएगा, राइट। एंड ये प्रोजेक्ट कहाँ का है के लिए है? त्रिपुरा एंड नागालैंड के लिए। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अमाउंट अप्रूव किया यहाँ पे? $225.5 मिलियन। तो कई सारी चीजें हो गई इसमें याद रखने की। नेक्स्ट, किन्होंने अभी रिसेंटली या फिर कौन वो पहले इंडियन बने जिन्होंने होस्ट किया इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को? तो ये सबसे पहले याद रखेंगे 52nd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स थे। वीर दास जो कि एक कॉमेडियन है, राइट, स्टैंड अप कॉमेडियन है, इनके द्वारा होस्ट किया गया ये इवेंट एंड ये पहले इंडियन बने टू होस्ट इट। नेक्स्ट, किस प्लेटफॉर्म ने रिसेंटली पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ टू एम्पावर वीमेन सैलून एंड ब्यूटी पार्लर ओनर्स? तो किस प्लेटफॉर्म ने पार्टनर किया अर्बन कंपनी के साथ? वो है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, उस कैंपेन का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया था यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी के द्वारा टू एराडिकेट चाइल्ड मैरिज एंड एम्पावर यंग गर्ल्स इन इंडिया। तो वो है बाल विवाह मुक्त भारत, राइट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव भी इसके अंदर आ जाता है। देन यहीं पे हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल लॉन्च किया गया कि कोई भी चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड गर्ल्स के लिए 18 साल, बॉयज़ के लिए 21 साल एज है वो शादी की। नेक्स्ट, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने अनाउंस किया सिलेक्शन ऑफ 8 स्टार्टअप्स टू बूस्ट डैश एंड नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम टू सपोर्ट व्हाट? तो ये लॉन्च किया गया था टू सपोर्ट द नेशनल क्वांटम मिशन। देखो क्वांटम टेक्नोलॉजीज में ना क्यूबिट्स होती हैं जिससे आपकी प्रोसेसिंग होती है, राइट। एंड जैसे वैसे नॉर्मल बाइनरी होता है 0 1 पे चलता है सब कुछ, लेकिन क्वांटम फील्ड में या क्वांटम की सेक्टर में हम देखते हैं क्यूबिट्स। एंड इवन आप देखेंगे गूगल के द्वारा अभी क्वांटम चिप लॉन्च की गई है जिसका नाम है विलो। एंड ये बताया जा रहा है कि बहुत फास्ट है, इसमें जो कॉम्पिटिशन स्पीड है बहुत ज़्यादा है, आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा कम समय लेगी किसी भी बड़े से बड़े टास्क को करने के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेयर वॉज द इंडिया सिंगापुर बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हेल्ड 28 से 30 नवंबर तक? तो अग्नि वॉरियर कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हमें देखने को मिली थी अग्नि वॉरियर। एंड ये 13th एडिशन था इस एक्सरसाइज का अग्नि वॉरियर का। नेक्स्ट, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, जो एनेबल करेगा कंज्यूमर्स को टू फाइल देयर कंप्लेंट। तो वो है ई दाखिल पोर्टल। आप इस पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को रजिस्टर कर सकते हैं। एंड ये एक एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने एक MOU साइन किया मास्टर कार्ड के साथ ताकि MSME की फाइनेंसिंग की जा सके अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये किसके द्वारा किया गया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। मेन एम क्या है? MSMEs को फाइनेंस करना, राइट। MSME की फाइनेंसिंग के लिए ये साइन किया गया है। एंड इससे क्या होगा? $1 बिलियन यहाँ पे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक फाइनेंसिंग की करेगा 4 साल के लिए, राइट। एंड इवन यहाँ पे पार्टनरशिप ये तो हो गया टोटल, लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ मास्टर कार्ड के साथ जो मिलेंगे वो है $5 मिलियन की यहाँ पे फाइनेंसिंग की जाएगी। ये पैसा मास्टर कार्ड कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड कराएगा इंडिया में, जिससे फर्दर MSME लैंडिंग की जाएगी। एंड जो वीमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको यहाँ पे ग्रो करने का काम करेगा। एंड इसके थ्रू कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, हेमंत सोरेन, इनको स्वॉन इन किया गया एज विच चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। तो ये 14 चीफ मिनिस्टर बने हैं झारखंड के। एंड इनका 4th टर्म रहेगा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट, किनको अभी इलेक्ट किया गया 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो वो है मसातो कांडा। ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे मत्सुगु असाकावा को। नेक्स्ट, फ्रॉम विच सबमरीन, किस सबमरीन से भी टेस्ट की गई K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल? वो है INS अरिघात से इसको टेस्ट किया गया।
INS अरिघात की बात करें तो ये इंडिया की सेकंड न्यूक्लियर पावर ब्लास्टिक सबमरीन है, राइट। एंड ये जो K4 न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है, ये K4 आपका अपडेटेड वर्जन है K15 मिसाइल का। एंड K4 की जो रेंज है वो एक्सपेक्टेड है कि 3500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रहेगी। नेक्स्ट, फॉर विच ईयर इंडिया रिसेंटली गॉट द होस्टिंग राइट्स फॉर एशियन राइफल पिस्टल कप। तो किस साल के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले, तो 2026 के लिए इंडिया को यहाँ पे राइट्स मिले हैं। एंड 2024 में याद रखेंगे इंडिया ने ISSF का वर्ल्ड कप फाइनल फॉर राइफल पिस्टल शॉटगन भी इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भी साइन किया एक MOU रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया के साथ, ताकि एडवांस क्वालिटी की डायबिटिक केयर की जा सके इंडिया में। वो है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। नेक्स्ट, अभी 18 NCB इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन सीमेंट कंक्रीट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स देखने को मिला 27 से 29 नवंबर तक। इसके दौरान NCB लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है, वो है डॉक्टर HC विश्ववर्या। इनका जो सीमेंट एंड कंक्रीट सेक्टर में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट, इसको ग्रो करने के लिए एंड नेट जीरो फ्यूचर सीमेंट सेक्टर में अचीव करने के लिए, इसीलिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, सिनबेक्स एक्सरसाइज, ये एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी एंड कंबोडिया आर्मी के बीच में कंडक्ट कराई गई। मार्क करके चलेंगे, इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी के बीच में। ये इस एक्सरसाइज में 20 पर्सनल देखने को मिलेंगे दोनों साइड से। इंडिया की तरफ से इन्फेंट्री ब्रिगेड से यहाँ पे देखने को मिले। ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पे थी, लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो पुणे महाराष्ट्र में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग की रिपोर्ट इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द फ्यूचर वर्क पब्लिश की गई जो जून 2022 में, द नंबर ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 23.5 मिलियन बाय व्हाट ईयर। तो 2029-30 तक 23.5 मिलियन यहाँ पर गिग वर्कर्स एक्सपेक्टेड है कि हो जाएंगे। एक और डाटा बताता है कि 2030 तक जो पोटेंशियल है, राइट, ये तो हो जाएंगे, लेकिन जो पोटेंशियल है वो है 90 मिलियन जॉब्स जनरेट करने का बाय द गिग सेक्टर, राइट। ये 1.25% कंट्रीब्यूट करेंगे टू इंडियाज GDP। नेक्स्ट, इंडिया ने अभी री-इलेक्ट किया, इंडिया वाज री-इलेक्टेड टू द UN पीस बिल्डिंग कमीशन फॉर व्हाट टर्म, फॉर 25-26 के लिए री-इलेक्ट किया गया है इंडिया को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, टू विच कंट्री रशिया हैंडेड ओवर द ब्रिक्स चेयरमैनशिप, तो ब्रिक्स ने ब्राजील को हैंड ओवर कर दिया अपनी चेयरमैनशिप। एंड याद रखेंगे ब्रिक्स नेशन से 2 कंट्रीज ऐसी हैं, एक इंडिया एंड एक ब्राजील, जिन्होंने चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव को मना कर दिया था, उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। नेक्स्ट, विच कंट्री एंड इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो कोलैबोरेट करेंगे ऑन डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम्स फॉर इंडियन नेवी, तो वो है यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड UK। नेक्स्ट, when is UN Day of Remembrance for all victims of chemical warfare annually observed across globe? कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व करते हैं 30 नवंबर को। नेक्स्ट, किस स्टेट की हॉकी टीम ने रिसेंटली अभी जीता 14th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2024 को, तो ओडिशा की टीम ने जीता। ओडिशा की टीम ने हरियाणा को हराया बाय 5-1 इन द फाइनल्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली एक अग्रीमेंट साइन किया है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ वर्थ 226.18 करोड़ रुपीस का। ये कॉन्ट्रैक्ट गार्डन रीच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, राइट। यहाँ पे 13 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरीज को डिलीवर किया जाएगा अंडर द वेस्ट बंगाल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, राइट। इससे क्या होगा, जो वेसल्स हैं, राइट, उनमें ट्रांसपोर्ट में, लॉजिस्टिक्स में काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, उस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ जिसमें इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि पेहेंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी ऑफ मलेशिया। इस एक्सरसाइज का नाम क्या रहेगा, ये है आपकी हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज, राइट। ये 4th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में हुआ था, और कहां पर, मलेशिया में इस एक्सरसाइज को देखने को मिला था। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इंडियन आर्मी में किस रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया, किस रेजिमेंट के पर्सनल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो महर रेजिमेंट का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिला था, 78 पर्सनल्स फ्रॉम महर रेजिमेंट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट, एक लोन अग्रीमेंट, जिसका एम रहेगा कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप फार्मर्स को बेटर यहाँ पे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल्स मिल सके, बेटर पेस्टिसाइड्स या फिर बेटर एग्रीकल्चर
का खाद आपकी सारी ये चीज़ें मिल सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितने अमाउंट का अग्रीमेंट साइन किया? $98 मिलियन का यहाँ पे सेटअप किया। इस प्रोजेक्ट के अंदर आप देखेंगे 6 क्लीन प्लांट सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, बेटर लेबोरेटरीज होंगी वहाँ पे, ट्रेन स्टाफ होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे की जाएगी ताकि प्रोड्यूस को यहाँ पे ग्रो किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years? सो नेदुम्पिला नेटुम्बो नांदी नादियावा, राइट, इनको अपॉइंट किया गया, मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली रीअपॉइंट किया नागोजी ओकोंजो-इवेला को एज द 8th डायरेक्टर जनरल फॉर अ कॉन्जिक्यूटिव 4-year टर्म एंड इनका जो सेकेंड टर्म है 1 सितंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनॉग्रल सेशन ऑफ द ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस हेल्ड नवंबर 2024 में? तो कहां पर हुआ था इनॉग्रल सेशन इसका? ये हमें देखने को मिला था न्यू दिल्ली में, ठीक है। सॉइल हेल्थ पर, सॉइल मैनेजमेंट पर, सॉइल को कंजर्व करने के लिए ये इवेंट देखने को मिला। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली चोजन एज द यूएस एम्बेसडर टू द नेटो? तो यूएस एम्बेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं टू नेटो? वो रहेंगे मैट विटेकर, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान, जिसको हम एसेसिबल इंडिया कैंपेन के नाम से जानते हैं, जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसको 9 साल पूरे हो गए ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑन 3 दिसंबर 2024। तो अंडर विच मिनिस्ट्री सुगम्य भारत अभियान ये लॉन्च किया गया था? तो यह मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इसके अंडर इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिसेंटली साइन किया एक अग्रीमेंट फॉर द शॉर्ट रीफिट एंड ड्राई डॉकिंग ऑफ द इंडियन नेवल शिप INS विक्रमादित्य? तो वो है कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहाँ पे INS विक्रमादित्य के जो इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा एंड ताकि आज की जनरेशन के हिसाब से उसको यहाँ पे लाया जा सके। 1207.5 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड 5 महीने के लिए ये रिफिटिंग चलेगी। नेक्स्ट, गुजरात की किस साड़ी को अभी GI टैग मिला? तो वो है घरचोला साड़ी को, मार्क करेंगे। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव कमिटमेंट्स की बाय इंडियन कंपनीज, जो कि रिलीज की गई ICRA ESG रेटिंग्स के द्वारा। ESG होता है इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग के द्वारा। इंडिया की यहाँ पे क्या रैंक रहेगी? 6th रैंक रहेगी ग्लोबली। अगर मैं बात करूँ ग्लोबली किसने टॉप किया, तो यूके ने टॉप किया। इंडिया की कितनी कंपनीज हैं? 127 कंपनीज रहेंगी यहाँ पे। यूके की कितनी कंपनीज हैं? 702 कंपनीज ने यहाँ पे कमिट किया टू द साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव्स। चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली टॉप किया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इन द सिप्री टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विस कंपनीज की लिस्ट में, जो कि सिप्री के द्वारा रिलीज की गई है? तो अगर मैं बात करूं इंडिया की 3 कंपनीज है टॉप 100 में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 43rd, BEL 67th पोजीशन पे एंड मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड 94th पोजीशन पे। तो इंडिया में तो हॉल ने यहाँ पे टॉप किया, ग्लोबली लॉकहीड मार्टिन ने यहाँ पे टॉप किया है, इसकी फर्स्ट पोजीशन रहेगी, जो कि USA की कंपनी है। नेक्स्ट, अभी USA ने अप्रूव किया $1.17 बिलियन की डील ताकि एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंसर्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके इंडियन नेवी को, राइट। इंडियन नेवीज सिकोर्स्की MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के लिए, राइट। तो इसको अपडेट किया जाएगा यहाँ पे। एंड सी हॉक किंग जो हमारा हेलीकॉप्टर है, 3 डेकेड से भी ज़्यादा जो इंडियन आर्मी में काम कर रहा है, उसको ये रिप्लेस करने का काम करेगा MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, OECD की इकोनॉमिक आउटलुक आया दिसंबर के लिए। इन्होंने इंडिया का जो GDP फॉरकास्ट है 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया टू 6.8%। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, होमवर्क पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसरो के नए चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं, नाम बताओ एंड नंबर बताओ, वो कौन से नंबर के चीफ रहेंगे इसरो के। देन इसके बाद बताओ किनको BCCI का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है एंड BCCI का ट्रेजरर कौन अपॉइंट किए गए हैं, इन दोनों का नाम बताओ और ये दोनों किनको सक्सीड करेंगे वो भी नाम बताओ। फिर इसके साथ बताओ कौन सा एडिशन का प्रवासी भारतीय दिवस अभी हमने ऑब्जर्व किया, कब ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी डेट बताओ, डेट बताओ एंड क्यों ऑब्जर्व किया जाता है वो बताओ।
राइट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, मैक्स टू मैक्स लाइक चाहिए मुझे आज की वीडियो में, एंड मैक्स टू मैक्स कमेंट चाहिए। जो भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ सभी बच्चे होमवर्क क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करा करो। बहुत अच्छा सेशन हम डेली बेसिस पे लेते हैं, सारी न्यूज़ हम डेली बेसिस की कवर करते हैं जिससे आपकी लर्निंग में कोई कमी ना आ सके।